So India take on their neighbors once again, but this time the Super 8 stage. It's India versus Bangladesh. And hello and welcome. You're watching The Narrative, a T20 World Cup Special brought to you by the Times of India. I'm Suhaas Vedhlaam, and joining us on the show is Mr. Saba Karim, Mr. Vijay Dahiya. Thank you so much, gentlemen, for being here. As always, India versus Bangladesh. We'll start with someone who's wearing something similar to Bangladesh jersey. We'll start with you. Is that the reason why is he wearing that? Ask him that. Come on, be more forceful, Suhas. He is a wicket-keeper at the end of the day. Do you think I can be that? रुको, वो फायर कर रहे हैं तुम्हारे कंधे पे रख के. Exactly. उनसे ज्यादा पास तो ये बैठे हैं अगर पूछना भी है तो. भाई कुछ तो सपोर्ट करो उन्हें. Right. You want a good game. The Indian side has not been challenged when it comes to skill. Right. They were challenged because of the surface that were there in USA. Since we saw the first game as well, they have not been challenged, and you want some sort of a challenge before they start playing big games, all important games. Yeah. You got Australia in next game, and the way they are at the moment, they're all set to get into the semi-finals. So we're talking about big games. So maybe they get challenged, and if I'm wearing this color, can support them, then well, fair enough. One thing's worked their way. I'm getting news that Bangladesh have won the toss and they've decided to field first. Yes, sir. Bangladesh actually have tested India in World Cup events, especially T20. Mm-hmm. If you recall that Litton Das innings, which was cut short by KL Rahul's direct throw. Otherwise, in that rain-truncated game, you never know, Bangladesh would have gone through. Then it happened long time back, if I remember correctly. I think 2013, the last over bowled by Hardik Pandya. Mushfiqur Rahim was the crease. It was almost, India was dead and buried. But then MS Dhoni ran that 10 meter or 50 meter sprint like Usain Bolt and effected that run out. So yes, I think Bangladesh, you see, if you look at the performance in this World Cup, they have done well as a bowling unit. They do have 3 pace bowlers. They have adequate spinners. Correct. Tanzim Hussain is the right arm pace bowler who has shown some promise. They have Taskeen Ahmed, the vice captain, and they have Mustafizur, the left arm seam bowler. Plus they have that leggy who has done well, Rishad. And then they have Shakibul Hassan. They have Mehdi Hassan. So I think they do have a decent bowling lineup. It's the batting which is a worry. But I think this is a good opportunity for them since they have won the toss and they have decided to put India into bat. And Antigua in a different venue, completely a different playing surface. So I think India will really have to work very hard. But I'm sure the kind of talent which India has and the kind of intent they have shown, India को आगे निकल जाना चाहिए. बड़ा इंटरेस्टिंग है जो सभा ने यहाँ पे जिक्र किया कि बल्लेबाजी थोड़ी सी दिक्कत भरी रही है और फिर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग टीम को पहले बल्लेबाजी कराई है. जब आपकी बल्लेबाजी दिक्कत रही है और उस स्ट्रॉन्ग टीम ने अगर 160 से ऊपर कहीं रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए तो फिर आपके लिए और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं. तो कहीं ना कहीं शायद कन्विक्शन से ज़्यादा होप है इस डिसीजन के अंदर कि आप उनको चैलेंज कर सकते हैं. भारतीय टीम को खासकर जो टॉप ऑर्डर में दोनों ओपनर्स हैं उनके रन नहीं बने हैं. ये शायद उस तरीके की सोच है. और आपने उस रनआउट का जिक्र किया, ये आपको साफ दर्शाता है कि जब बांग्लादेश के साथ मुकाबला होता है ना भारत का, तो मसला सिर्फ स्किल का नहीं है, एक मेंटल उस टफनेस का भी है. कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप compete तो कर सकते हैं लेकिन आगे नहीं निकल सकते. 14 मुकाबले हुए T20 के दोनों के बीच में, 13-1 का स्कोर है. वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें T20 में तो 4 बार मिले हैं, चारों बार भारत को वहाँ पर जीत हासिल हुई है. जिस तरीके की क्रिकेट भारतीय टीम पिछले कुछ समय में खेली है या T20 टैम्पलेट में खेलती है, जिस तरीके की विकल्प हैं, चाहे फास्ट बॉलर्स की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, मुझे लगता है हर जगह आप उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं. फील्डिंग एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और जहाँ मुझे लगता है कि बांग्लादेश थोड़ा लैक करता है. एक और एडिशनल एडवांटेज यहाँ पर आपको भारतीय टीम के अंदर नज़र आती है. तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन भारतीय टीम, मैं ये सोच रहा था कि वो टॉस जीते तो भी शायद पहले बल्लेबाजी करते ऑपोजिशन को देखकर कि अगर पहले रन बोर्ड पे लगाते हैं तो फिर कितना दबाव डाल सकते हैं. जब आप अफगानिस्तान के साथ उस तरीके से खेले हैं तो आप बांग्लादेश के साथ श्योरली खेलते हैं. इस ग्राउंड पे अब तक एवरेज स्कोर 121 रहा है, लेकिन उसकी बड़ी वजह क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम नामीबिया, ओमान इनके साथ खेली हैं. तो आप ये जज नहीं कर सकते हैं कि क्या ये जो सरफेस है इसी तरीके से खेलेगा और 121 ही काफ़ी रहने वाले हैं. अगर ये होता तो फिर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती कि अगर रन ज़्यादा नहीं बनेंगे, और जिन विकेटों पे ज़्यादा रन नहीं बनते उन पे विकेटें बाद में बेहतर नहीं होती और ज़्यादा स्लो होती जाती हैं. तो ये निर्णय थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि वो पहले भारत को बल्लेबाजी क्यों करा रहे हैं. आपको लगता है कि कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा इस विकेट पे या फिर नहीं इंडिया की तरफ से? नहीं, आगे जाते हुए इस गेम में इस विकेट पे खासकर should it go the distance, that is the 40 overs? नहीं, मुझे लगता है 20 ओवर में ज़्यादा परिवर्तन होना चाहिए. बांग्लादेश एक चांस ले रहा है कि T20 में ऐसे भी
एक पार स्कोर पे डिसाइड करना कितना रन आपको बनाना है, किस गति से बनाना है, वो एक चुनौती हमेशा से रहती है। पर बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, और जो जितनी भी बातें हम लोग कर लें, मॉडर्न T20 जो मैचेस हो रहे हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपके बैटिंग रिसोर्सेज के ऊपर, कि आपके अंदर वो स्किलफुल प्लेयर्स हैं कि नहीं, आपके जो रिसोर्सेज हैं क्या उनमें पावर हिटिंग की ताकत है कि नहीं। ये सारी चीज़ें इस समय बांग्लादेश टीम मुझे नज़र नहीं आती है। वही पुराने खिलाड़ी अभी भी खेल रहे हैं, टॉप ऑर्डर में भले वो तेज़ गति से रन बना लें, मध्य के जो ओवर्स होते हैं वहाँ पर वो गति उनको मिलती नहीं है, जिस तरह से उनको फिनिश करना चाहिए पारी को या मैच को, उस तरह के प्लेयर्स उनके पास है नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बांग्लादेश का, इसीलिए उनका बैलेंस जो है वो हमेशा से स्क्यूड रहता है। जो बैलेंस होना चाहिए जिस तरह से भारतीय टीम का है, उस तरह का बैलेंस इस टीम में नज़र नहीं आता है। इस पिच में अगर आप देखें तो स्पिनर्स का काफ़ी दारोमदार रहा है. डू यू थिंक दैट विल बी द सेम केस टुडे एज वेल, और द स्टोरी वुड बी डिफरेंट बिकॉज दे प्ले अ लॉट ऑफ स्पिनर्स, बांग्लादेश? Yes, but I think that's what I said. Even to tackle good quality spinners, you need to have the skill and the power. But I think they lack that. But I think at this stage, India is batting first. India needs to work on that kind of challenge because, as we have discussed, बांग्लादेश टीम के पास 3 अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स हैं. Right. तो वो मिडल ओवर्स में किस तरह से हम उनके स्पिनर्स के सामने बल्लेबाजी करते हैं, किस गति के साथ हम रन बनाते हैं, वो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हम कहाँ तक स्कोर लेकर जा रहे हैं. And with 3 spinners, you'll see one bowling in first 6 overs as well. If you look at 2 Indian openers, one, Rohit got out, he's batted 4 times, got out thrice, all 3 left arm pacers. So Mustafizur is waiting. 100% they'll use Mustafizur. Normally they use him very, very smartly, but here they think, you can put pressure on Rohit and as well as Virat as well. We talked about this young leg spinner, Rishad, and we know that Virat Kohli has got a little bit of a thing playing against the leg spinner as well. Right. So you might see a leg spinner or a spinner bowling in first 6, because if you have 3 spinners, you can't use them after 6 overs. You have to use one in a power play as well. All right. Now that Bangladesh have won the toss and decided to bowl first, we'll find out who, especially in the middle order of India, can tackle the spin threat that Bangladesh sports. We'll talk about that and a lot more in Squads Up. So who's it going to be facing the spinners? Are you looking at Dubey versus the spinners of Bangladesh, or are you looking at I'm looking Pant versus everyone. Okay. To be very honest, the way he started, if you look at his numbers in T20 cricket, number 3, his average, his strike rate, everything is phenomenal. And I think this is a fantastic move by team management, or maybe Pant has said that this is the number that suits me, and people are listening and giving him that number. Because in this format, you need somebody as an opener to start, and then you need somebody at number 3 to continue with the same sort of a mindset and same sort of skill set as well. He's somebody who plays almost everywhere. He's good against spin, he's good against fast bowling, he's got the shots that you need. I'm looking at him because he's somebody who's been among the runs, who's got starts. And I think you'll be looking at him to continue in the same fashion. Saba sir, I understand the intensity of a warm-up game might be different, but the fact that it was also against Bangladesh, the same opponents that Pant scored, do you think that would help? Yeah, it does. It just fills you with so much of confidence. And I think Rishabh Pant has played, such kind of bowlers, or this kind of a bowling attack number of times. And he's aware that he has been given this opportunity to bat at number 3. Okay. So with this kind of freedom also lies some kind of responsibility, and that responsibility is how you react to a particular situation. It is very well for the team management to entrust Rishabh Pant to come in and bat number 3. Okay. But now it's for Rishabh Pant to deliver on that promise which he has shown so far. So yes, I think Rishabh Pant will be a key player, and I think that is how India's team management have planned the batting order. So they do have Shivam Dube coming down the order, right? And he's been there so that they can whack the spinners out of the ground. They have 2 or 3 quality spinners, so can he do that? Before him we have Sky, and then on top of that we have Rishabh Pant. I think all these 2-3 players in the middle order, and especially with Rishabh Pant coming in at number 3, and I think as Vijay has rightly pointed out, I think this is if Rishabh can perform consistently at number 3, even if not consistently, I'm saying if he can continue to play impactful innings, that can make a big difference in India's progress to the final and then eventually to win the World Cup. All right, the definition of impactful keeps changing because of the surfaces that India has been fighting against, not just the oppositions, but 126.92 is the strike rate that Rishabh Pant is playing at right now. Do you see that improving very soon? It depends on what sort of a surface you're playing. Once again, I mean, okay. you won't look at the strike rate when you played in US
all those surfaces were very, very challenging. If you see them playing on a better surface, you definitely see strike rate getting better. And I think his strike rate, what it's showing right now, I think he's capable of much better than what is visible on the screen at the moment. He's the impact. एक और है ना विजय, ये तो स्ट्राइक रेट जो हम दिखा रहे हैं वो काफी पहले का है. नंबर 3 में जो स्ट्राइक रेट्स आएंगे अब धीरे धीरे करके वो नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि उनका काम यही है. इसी वजह से नंबर 3 पर भेजा गया है ऋषभ पंत को, ताकि आप स्ट्राइक रेट जो है ऊपर रखिए. एक और बात है जो व्यूअर्स को समझनी होगी, बहुत जरूरी. गिव मी सम टाइम, आई कैन एक्सप्लेन दैट. It is not about strike rate. For instance, if Rishabh Pant's strike rate is 150 in all the international T20 matches, getting to 150 is very easy. But how quickly you get to 150, that is what is called impactful innings. For instance, if I'm getting to my career high of 150 in mere 4 to 5 deliveries, that has got more significance than I'm batting 50 balls and I'm getting to 150. That anybody can do. You play first 10-15 balls very quietly, run a ball, you can always get to 150 later on. But those run a ball 12 or 15 runs will cost your team the match. So I think you need to get to your career high strike rate as soon as possible. That's the place wherein lies the core value of impactful innings. और उसको और सिंपल मैं आपको समझाऊं शब्दों में, जो सबा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 बॉल में आपने 15 रन बनाए ना, वो 150 की स्ट्राइक रेट है. तो क्या उसका इम्पैक्ट है 10 बॉल में 15 का, जहां पर आप देखते हैं कि लोग 8 बॉल के अंदर 21-22 रन की पारी खेल के मैच को बदल देते हैं. आप उस तरीके की बात करें कि उनका इम्पैक्ट कुछ इस तरीके का होना चाहिए. लिटिल सरप्राइज दैट मतलब यह है कि स्ट्राइक रेट ना एक बहुत ही टू-एज स्वॉर्ड है. No, not at all. It is a very ambiguous stats. Is the way you perceive it. So it depends on the team management and the player how you're looking at it, and the kind of message the team management is giving to a particular player. What's the point of having 150 strike rate if it is not for the cause of for the benefit of the team? अगर आप एक T20 innings को not just of Rishabh Pant, the entire innings of a team, उसको 3 phases में divide कर दें, तो then will be the first 6 overs, then 7 to 16, then 16 to 20, or it might be 15 to 20 as well. Do you think India has sort of done the right thing with 7 to 15 with Suryakumar Yadav and his approach, Sabasa? I think even that is changing rapidly. Okay. I think now teams are looking at blocks of 4 overs. All right. So that is why I think the first 4 overs in a power play is important. Then what you do after that, maybe they have split it in first 4 overs, then the next 2 overs, then they go to the next 4 overs, and according to that. So I think roles have been defined. That's what I'm saying. If you're sending someone like Shivam Dube, who's supposed to come in the middle overs, and if he gets to bat even 2 or 3 overs against spinners, he's supposed to get you a strike rate of 200 plus. Okay. It is not important whether he continues to bat right till the end. I mean, if he can do that with that kind of a strike, is perfectly fine. But his role is, once you step in against spinners, you're there for a reason. Even if in 1 over you can get me 20, I'm very happy with that. Take your chances. Yeah. But it's still interesting. आप अभी भी ना इस गेम को डिकोड करने में लगे हुए हैं. जैसे अभी बोला कि 4 ओवर का ब्रेक है. आज आप वेस्ट इंडीज को देखिए, उन्होंने 10 ओवर 5 गेंदों में 100 से ज्यादा रन खत्म कर दिए. ठीक है, पहले 2 ओवर में उनके 10 रन भी नहीं थे. हाँ, करेक्ट. राइट. तो आप इस पहले 6 ओवर में तो आप कई बार ये भी कह सकते हो कि 1 या 2 ओवर अगर मैं देख लूं, जो हिंदी में कहते हैं नाप ले लूं इसका, मैं ये गेंदबाज कौन है, फिर आप उसको अगले 2 ओवर में या 6 ओवर के अंदर आप एक ओवर आराम से 15-20 का उससे आप ले सकते हैं. तो वो भी समझदारी बहुत है आपकी. जो हमने कहा था कि अफगानिस्तान बल्लेबाज करते हुए नजर नहीं आए थे, बुमराह के अगेंस्ट आप स्टेप आउट करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, या पाकिस्तान ने जो गलती करी थी, बुमराह जब आए उनके खिलाफ आप उस तरीके की शॉट खेलने लगे. तो इस खेल में ये भी बहुत बड़ी समझदारी है कि आप किस समय किसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं. भारत के जो पहले 6 ओवर का आपने जिक्र किया, वहाँ पे आपके पास अच्छा मसला है. बीच के ओवरों में भी बहुत है, लेकिन हमारे जो आखिरी के ओवर बेहतर हो रहे हैं वो इसीलिए वजह हो रहे हैं कि हमारे बीच के जो टॉप ऑर्डर के जो है ना, उनमें से 1 या 2 खिलाड़ी वहाँ तक आखिरी तक जाते हैं. नहीं तो उतनी फायर पार का आप जिक्र करेंगे तो शायद उतनी फायर पार अभी आपको और जो चाहिए उतनी है नहीं. अभी तो जो क्वेश्चन मिल रहा है इसलिए मिल रहा है कि अक्सर आपको नंबर 8 पे नज़र आते हैं. अगर बैटिंग ऑर्डर आप देखेंगे, वो तो फ्लोटर आप उनको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जड्डू के का अब तक अगर आप देखें तो इस्तेमाल उस तरीके से हुआ नहीं है. तो आपके पास वो सारी चीज़ें हैं. कुछ सवाल मंडरा रहे हैं जड्डू के ऊपर भी, जिस तरीके से फॉर्म में वापसी नहीं कर पा रहे हैं. अगर आप आईपीएल का फॉर्म भी लेके चलें तो, क्योंकि उन्हें वक्त मिल रहा है बीच में. हिंदुस्तानी क्रिकेट में ना किसके ऊपर नहीं मंडराते. आप उसको किस तरीके से लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर. आप उसको प्रेशर लेना चाहते हैं कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, या ये कहना चाहते हैं कि नहीं यार, इतनी बड़ी बेंच स्ट्रेंथ और इतने सारे खिलाड़ी हैं आपस में,
टॉप पे रहने के लिए आपको जब मौका मिले आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। आप लगातार वहाँ बैठ नहीं सकते हैं। आप जब टॉप की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि सिर्फ पहुँच के बैठने के लिए नहीं है, वहाँ पर आपको रहने के लिए लगातार हाथ पांव मारने होते हैं। और यही चीज़ है जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो एक इस तरीके की टीम मानी जाती है कि यहाँ पर जगह बनाना इतना आसान नहीं है। तो हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल जैसे जैसे समय जाता रहेगा आप चैलेंज होंगे। और जड्डू एक अकेलौते प्लेयर नहीं है जो चैलेंज हो रहे हैं। बातें किसी के भी होंगी, ओपनर्स रन नहीं बना रहे हैं वहाँ जो बाहर बैठे हैं, यशस्वी हैं, शुभमन गिल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हर जगह के लिए 2-2 3-3 लोग आपको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस टीम में तो जड्डू के साथ अक्सर खेल भी रहे हैं। एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है, नहीं और अच्छी टीमों के लिए यही तो है कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए और हेल्दी कंपटीशन कायम रहे। Sabas, the Indian squad, we're having a look at it, very settled as of now. Rohit and Virat, they need to be amongst runs as soon as possible. But very quickly, if we can have a look at the Bangladesh squad, very surprised that Shoriful's not been picked for this particular game. The pacer, he did well against India in Nassau County as well. It was a warm-up game. Very surprised that the pacer hasn't come back yet for someone who's troubled. अपनी बैटिंग भी तो तब मजबूत करनी है। सुहास, कितने बॉलर को खिलाएंगे आप? आपके पास कौन कौन है? आपके पास तंजीम हसन और राइट आर्म पेस बॉलर है जी। फिर आपके पास मुस्तफिजुर हो गए, तस्कीन अहमद हो गए। 3 पेस बॉलर से अलावा आप कब खिला नहीं सकते हैं। कि आपको बैटर चाहिए ना टीम में। उसके साथ साथ आपके स्पिनर्स हैं, शकीबुल हसन हो गए, उसके बाद वो राइट आर्म लेग स्पिनर रिशाद हुसैन है। राइट। आपको बल्लेबाजी भी तो तगड़ी करनी पड़ेगी, इसीलिए इसी वजह से उनके लिए जगह नहीं है। और ऐसे भी आपके पास मुस्तफिजुर हैं, लेफ्ट आर्म सीम बॉलर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। तंजीम हैज डन वेरी वेल एज अ राइट आर्म पेस बॉलर, ही इज यंग अपकमिंग। Taskin is the vice captain. You possibly cannot drop him. So I think in Bangladesh right now is suffering more because of the batting failures than their bowling attack. Against India, जितने लेफ्ट आर्म हमारी टीम में हैं, लेफ्टी बैट्समैन जितने हैं, आप महमूदुल्लाह को भी देखेंगे कुछ ऑफ स्पिन करते हुए वो नजर आएंगे। तो वो विकल्प हैं आपके पास 2-2 ओवर निकालने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सबा यहाँ पे कि जो दिक्कत है वो बल्लेबाजी उनकी बहुत ज़्यादा है। और इस फॉर्मेट में आपको बल्लेबाजी बेहतरीन करनी पड़ेगी, वो अब तक उनकी तरफ से नजर आई नहीं है। All eyes on Shakib Al Hasan then as the batter. We understand he's an all-rounder, but Shakib Al Hasan the batter, 1/2 century against the Netherlands. उसके बाद ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए अपना जलवा बैट के साथ। आज उन्हें खरा उतरना पड़ेगा, बहुत सारी उम्मीदें उन पर टिकी हैं। वीरू ने जो बोल दिया है उसके वजह से ऐसे भी दबाव में है वो। और मुझे लगा सुहास ने जैसे बोला ना, ऑल आइज ऑन हिम एज अ मैच रेफरी देखता है ना, क्योंकि खेल के अलावा भी ऑल आइज रहती है उनके ऊपर कि वो बिहेव कैसे करेंगे। पर वो उनके लिए एक चैंपियन प्लेयर रहे हैं। अगर आप देखें उनके लिए, छोड़िए, एक समय में वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर थे। और जिस तरीके से ये खेल चला है, क्या उनका महत्वपूर्ण योगदान उस क्रिकेट के लिए रहा है, उस कंट्री के लिए रहा है। और उनके जो युवा खिलाड़ी हैं ना, उनकी तरफ देखते हैं, व्यवहार के लिए नहीं, उनके स्किल के लिए, वो क्या लेके आते हैं। क्योंकि वर्ल्ड ओवर हर जगह की लीग में आपको वो खेलते हुए नजर आएंगे। वो वेस्ट इंडीज़ खेलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए नजर आते हैं आपको, वो दुबई की लीग में खेलते हैं, कनाडा खेलते हैं, हर जगह खेलते हैं वो। तो जब आप हर जगह खेलते हो तो वो एक्सपीरियंस आप आके वापस अपने ड्रेसिंग रूम में शेयर करते हैं। तो जो उनका जो कद है उस ड्रेसिंग रूम में वो बहुत बड़ा है, उनकी जो इज्जत है वो बहुत बड़ी है। और उस इज्जत को बरकरार रखने के लिए इस स्टेचर के जो खिलाड़ी होते हैं उनको लगातार परफॉर्म करना पड़ता है। और जब आप अनुभव की बात करते हैं ना, तो एक्सपीरियंस की जो टेस्ट होता है वो ऐसे मैचों में ही होता है। वो अनुभव की तरफ तभी देखते हैं आप जब परिस्थितियां या तो कठिन हो या आप बहुत बेहतरीन टीम के खिलाफ खेल रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप उनकी तरफ देखेंगे तो उनकी बहुत बड़ी वजह यही होगी कि इस तरीके का मैच है, आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं। राइट। Liton Das also, I think he's such a fabulous player, Liton Das. Yeah, very fluent. Yeah, very fluent, so smooth. I think he's got a very sound head. I think इंडिया के सामने अगर एक ऐसा अकॉम्प्लिश कोई प्लेयर है तो मुझे लिटन दास बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और अकॉम्प्लिश प्लेयर लगते हैं। उसके साथ साथ खुद कप्तान नजमुल हसन शांटो, उनको कप्तान बनाया गया है क्योंकि सेलेक्टर्स को ये लगता है कि उनके अंदर वो प्रतिभा है। कई सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। शाकिबुल के बारे में विजय ने बात की, उसके साथ साथ महमूदुल्लाह काफ़ी साल से खेलते आ रहे हैं। तो इन एक्सपीरियंस बैटर्स को ना आगे निकल कर परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि इस समय दबाव बांग्लादेश के ऊपर उनके बल्लेबाजी की वजह से ही है। और जितने सारे मैचेस उन्होंने खेले हैं उनकी बल्लेबाजी जो है वो हर बार लड़खड़ाई है। और इस प्रकार के कंडीशंस में वो स्किल सेट अभी भी उनके बैटर्स का नज़र आया नहीं है। राइट। एक बल्लेबाज ज़रूर है जो 40 तक 2 बार पहुँचे। उनकी लास्ट हाफ सेंचुरी यूएसए के खिलाफ थी, जो इस टूर्नामेंट के पहले जब वो खेल रहे थे टेक्सास में, ह्यूस्टन में, ग्रैंड प्रेरी में, तब उन्होंने एक हाफ सेंचुरी अच्छी वाली लगाई थी। That's Tauhid Hridoy. Tauhid Hridoy, very promising. Come the big game, do you think he can deliver? He has the right kind of potential to do well. He's a very fluent left-hand batter, willing to play his shots, very precise in his shot making. But I think he needs to go on whenever he gets an opportunity to bat. And I think at times he does get
get bottled because of the kind of pressure he faces due to maybe a dip in the strike rate. So I think that's where you need to be more smart, more intelligent in trying to understand the situation of the game and then bat accordingly. I'm sure with experience, he will gain all that. Vijay, so then when it comes to Bangladesh right now, we're naming individual superstars and some of the stars in the making. So how much of it in terms of approach is that if somebody is doing well at a personal level, you need someone who can complement him at the other end so that the game goes on in a manner that you don't go back into the shell. जो अक्सर देखा गया है बांग्लादेश के खिलाफ. I think that's what the challenge is. That's what the challenge is. I mean, like, you know, you're talking about individuals, bits and pieces. They are playing good in one game. Someone else is playing, better than that in the other game. But as a team, they don't give you that impression at the moment that everything is clicking for them. It's not that everybody knows their role right now. And it's important to win a couple of games as a team. We know it's a team game. It's played by individuals. Individual will, they go out there and perform, and that comes into team kitty. But still, I feel that they're missing out that one thing. They need to play as a team. They need to win a couple of games as a team where everybody is contributing and trying to figure it out. This is my role. Right now, they're just looking at one or two players. Maybe he'll win it. Or the other thing they're looking at, that they win on someone's bad day rather than winning on their own ability. You have something to add to that, sir? No, I think that's the way it is. And I think Bangladesh needs to step up at the international level. मुझे याद है उनको टेस्ट मैच स्टेटस कब मिला था. वो मेरा भी टेस्ट मैच था. वो 2000 की बात है, नवंबर में. तो जो प्रोग्रेस होना चाहिए था बांग्लादेश क्रिकेट में, वो नहीं हो पा रहा है. क्या कारण है, ये तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही आपको बता सकता है. और कई सारे खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा मौका मिला है जी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. ऑल दोज यंगस्टर्स हु आर कमिंग इन, दे हैव नॉट बीन एबल टू maybe cement their place in the side, whatever may be the reason. But I think the kind of progress we would like to see Bangladesh achieve, they have yet to do that in all three formats. I think that has been the biggest challenge for them. I think one of the biggest reason which I could see as an outsider is the way they prepare the wickets at home. Only last year जो इंडिया टीम गई थी खेलने के लिए, तब मुझे लगा कि पहली बार उन्होंने स्पोर्टिंग ट्रैक्स बनाया था. और अगर उतना वो करेज के साथ विकेट्स बनाएंगे, तब मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रगति ज़्यादा मिलेगी उनको, जो अभी तक देखने को मिली नहीं. यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ अगेंस्ट टॉप क्वालिटी साइड्स ऑन अ फेयर विकेट. That's the only way you can improve. That's an excellent point, sir. जब BPL खेलते थे, excellent point ऐसे नहीं बोलता हूँ. नहीं हमेशा क्या है विजय, अपनी लड़ाई है खुद लड़ो. नहीं मतलब नहीं सर, मैं ये कहने वाला था कि जब वो BPL खेलते थे, मैं समझ रहा हूँ अब तो मत विजय से बात कर. जब BPL खेलते थे तो वहां पे उन्होंने एक ऐसा रूल भी ला दिया था बीच में कि you need to play a leg spinner because somewhere they understood the dearth of having a leg spinner and that style of bowling at the international level. How will you even achieve it if you don't have it over here? And wickets were also a key part. Preparing the wickets were also a key part in their lapse of having such a bowler. Very, very important what Saba has touched upon. I mean, like if you keep preparing those wickets which are good for spinners, how will you produce fast bowlers? I remember, and you remember it very well as well. A couple of years ago, everybody started talking about we're not producing fast bowlers in domestic cricket. We had those kind of surface which were helping the seamers. Okay. And look at the options right now that we have. I mean, last 5-6 years, we have at least 10 or 12 bowlers who are there or around, who can stake a claim and get into the Indian side. And this is what happened. You have to give them a same conducive environment to produce these kind of. I'm a little surprised to say that they're saying you have to play a leg spinner first. You have to. बीच में एक रूल आया था सर. वो ढूंढने पहले बनाने पड़ेंगे ना. Exactly. है ही नहीं, कहाँ से ढूंढ के लाओगे आप. इसीलिए they're getting very excited about this youngster who's playing. Because I remember मैं घर से जब आ रहा था सोच रहा था इससे पहले कौन था यार जो लेग स्पिनर खेला था. आलोक कपाली. Can you believe it? वो बैटिंग था और सिर्फ वहाँ करते थे. उसका भी नाम कहाँ से दिमाग में ढूंढ के आया कि आलोक कपाली था जो लेग स्पिन डालते थे. And right now with this young kid, everybody is very excited about him. And this is how you find. But अगर आप conditions नहीं देंगे तो फिर कहाँ से आप players को produce करेंगे? All right. And we'll discuss this and a lot more in the stories on the sides. A very green bowling attack in terms of Bangladesh. They need to get a little more experience, or would you say Mustafizur has enough experience? It's just a matter of form. Once he comes back into form, the variations will flow. For a bowler, what is a form? I'll be very honest with you. In games like this, what do you expect? You need a couple of other bowlers to just chip in and create that sort of a pressure. If you're just playing with one bowler, it's not going to be easy. But look around and see what they have. I mean, like Shakib Al Hasan has been there for
for ages. Yeah. And then you have Tuscan, who's been a vice captain now. He's been playing it. Struggling with form. What can you do? They still feel he's the best option that they have. Yeah. And it's not that he's struggling, it's the system which is struggling, which is not able to throw those names. If you think somebody is struggling, then you don't have to make him a vice captain, because there is an extra pressure on you. Okay. Because as a vice captain, are you going to drop or have that kind of culture that if you're not good enough for this particular game, or you're struggling with your form, you can be dropped. And unfortunately, that culture is not there in Asia. Forget about Bangladesh; it's not there in Asia. Yeah, it becomes difficult for everyone, because it's your ego that I'm a captain or a vice captain. How can I struggle? And even if I'm struggling, I'll get a longer leash to carry on. They have what it takes, but then it's the mental thing. I feel when they're playing against a top side is always the mental barrier, that if they can break that, if they have that sort of a feeling in that hurdle that they make before the game start, then we can win it. Then only they can challenge the side which are superior to them. All right. And very quickly, if you can tell us, Rohit, Virat, they need to come back into form. Next is Australia. I know there is a big game on hand, this one as well. But given that India is going to play Australia up next, you need your top order to be firing. Let's leave Australia now. Okay. They need to fire now, isn't it? I mean, they need to perform because both of them are they're like the bulwark of the entire batting order, especially when you're batting at the top. So they need that good start, and that's what Rohit Sharma and Virat Kohli have to do. Okay. And I think the reason why they're part of this 11 is because of their experience and their ability to score runs in big games and World Cup events. So I think this is the time now for them to come good. And I think once they come good, then look at the confidence that will percolate down the order. Then everybody will feel much better, and you can always post a big score. I say it's the other way around. Yeah. They are normally the one that you're looking who's going to score. Right now, everybody else is doing it. So if they come to the party, it's a bonus. All right. If they come to the party, it's a bonus. Very quickly, we'll move on to the extra yard, when we'll tell you what our experts think the scores might be. All right, we're almost going to begin the match. So, but before that, if you can tell us, first 6 overs, what would be a score on the board? Wicket and Tigaka, I'm looking at 40 for one. We can easily get to about 165, 170. I think that's what India should be looking at. 165, 170? 145 plus, 175 plus. All right. 145 plus, 175 plus, says Vijay, sir. But I'll tell you what, India would be very happy with that kind of a score. Well, that's all we got for you in the pre-match show. We'll meet you at interlude. Thank you so much, gentlemen, for joining us at the pre-match show. And it's the Bangladeshi boys who won the toss, and they said we'll be fielding first. Let's enjoy the game.